Assalamu alaikum students. The topic of our discussion is agreement and disagreement, and this is unit number 3. It is the first module of unit number 3, that is the function of language, and in function of language we are going to discuss agreement and disagreement. अब ये agreement and disagreement होता क्या है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कभी भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ठीक है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, हम अपने ख़ानदान में बात करते हैं, हम किसी एजुकेशनल सेटिंग में बैठ के बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे हम बैठ के मतलब गुफ्तगू करते हैं। और हम हमेशा कुछ मौज़ूआत होते हैं जिन पे हम गुफ्तगू करते हैं, और उन मौज़ूआत से रिलेटेड बाज़ लोग जो हैं उनकी राय जो है पॉजिटिव होती है, बाज़ लोग जो होते हैं उनकी राय नेगेटिव होती है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हर कोई अपना अपना ओपिनियन रखता है, और वो ओपिनियन जो है वो उसका हमसे मिल भी सकता है, उस शख्स का, अगर वो उसका ओपिनियन हमसे मिलता जुलता है तो वो एग्रीमेंट के दायरे कार में आता है, और अगर उस शख्स का ओपिनियन हमसे डिफरेंट है, उसकी जो राय है वो हमसे मुख्तलिफ है, तो वो फिर डिस एग्रीमेंट की सेंस में आता है। ठीक है, तो गुफ्तगू जब भी होती है उसके अंदर हमें एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो करना होता है। ठीक, तो चूंकि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उस लैंग्वेज की फंक्शंस का सीखना ज़रूरी होता है। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट इस वजह से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ताकि जब कभी भी आप इंग्लिश कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व हों, आप गुफ्तगू कर रहे हों, तो उसमें फिर आपको डिफ़िकल्टी जो है वो फ़ील ना हो। यू शुड बी एबल टू नो, या यू शुड हैव सर्टेन एक्सप्रेशंस अंडर योर बेल्ट इन योर माइंड, के दैट यू कैन यूज़ देम टू शो एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट व्हेन एवर यू आर इन्वॉल्व इन अ डिस्कशन। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, हम चंद एक्सप्रेशंस देखते हैं कि जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीमेंट शो करने के लिए और डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए। इन माय ओपिनियन, ठीक है, मेरी राय में, अब इन माय ओपिनियन इससे जो अगले अल्फाज होंगे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि वेदर वी आर एग्रीइंग और वेदर वी आर डिसएग्रीइंग। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशंस होंगे ये इन अल्फाज के बाद लगेंगे। इट सीम्स टू मी, आई फील, डोंट यू थिंक, according to me, according to him, according to that individual। ठीक है, तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं कि जिनका आगाज होता है। ठीक है, अब कंप्लीट एग्जांपल्स देखते हैं। इन माय ओपिनियन इट वाज द मोस्ट इमोशनल ट्वाइलाइट बुक इन द सीरीज। इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, कि ये जो थी सबसे ज्यादा इमोशनल किताब थी, ट्वाइलाइट। डोंट यू थिंक दैट यू शुड enjoy being famous। अब ये बेसिकली वो एक्सप्रेशंस हैं कि जो कि यूज़ किए जा रहे हैं अगले बंदे को गुफ्तगू में इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंस के रिस्पॉन्स में जो है वो एग्रीमेंट आएगा, या फिर इसके रिस्पॉन्स में डिसएग्रीमेंट आएगा। अब फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है, अगर हम ये लिखते हैं ना कि इन माय ओपिनियन इट वाज द मोस्ट इमोशनल ट्वाइलाइट बुक इन द सीरीज। अब जो अगला बंदा कहता है, नो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक द फर्स्ट वन वाज बेटर। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस एक्सप्रेस किया गया, और फिर उसका जो डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट शो करना है तो इन माय ओपिनियन, अगर मैं बात करता हूँ, इन माय ओपिनियन इट वाज द मोस्ट इमोशनल ट्वाइलाइट बुक इन द सीरीज। ओ या, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू दैट इट वाज द मोस्ट इमोशनल बुक आई हैव एवर रेड। ठीक, तो अब ये एग्रीमेंट है। ठीक, तो ये चंद एक्सप्रेशंस हैं जो कि आगाज करते हैं गुफ्तगू का, जहाँ से आगाज होता है, डोंट यू थिंक दैट यू वुड एंजॉय बीइंग फेमस। अब आप इसका क्या रिप्लाई देंगे? ठीक है, कि ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो यकीनन एंजॉय करता है अगर वो मशहूर होता है, क्योंकि वो जहाँ जाएगा लोग उसको पहचानेंगे। तो यू कैन एग्री, बाज़ लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई प्राइवेसी नहीं रहती, आप जहाँ पे जाते हैं लोग आपको घेर लेते हैं, तो लिहाजा प्राइवेसी आपकी मुतासर होती है। इट सीम्स टू मी दैट योर क्वेश्चन इज एन इंटरेस्टिंग वन। ओ या, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई फील एवरीथिंग विल गेट ऑल राइट। I also think so. ठीक है, don't you think she is right? Yeah, I agree that she is right. According to my views, she is correct. I don't think so. तो अब ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस आपके सामने मैंने यूज़ किए। ठीक है, अब एग्रीमेंट के लिए आई एग्री, चंद एक्सप्रेशंस जो कि एग्रीमेंट के लिए
वो जो ऊपर सेंटेंसेस हमें देखे वो गुफ्तगू को इनिशिएट करने के लिए थे, ठीक है, गुफ्तगू का आगाज करने के लिए थे, कि जहाँ से गुफ्तगू का आगाज होता है, जहाँ से आप अगले बंदे का ओपिनियन जो है उसका एग्रीमेंट और उसका डिसएग्रीमेंट जो है वो मांग रहे होते हैं, मतलब कि तवक्को कर रहे होते हैं कि अब अगला बंदा या तो हमारी बात से इत्तफाक करेगा या फिर वो हमारी बात से इत्तफाक नहीं करेगा, ठीक है। तो इत्तफाक अगर हम करते हैं, अगर हम एग्री करते हैं अगले बंदे के ओपिनियन से, जिस बंदे से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उसके लिए चंद बुनियादी जो एक्सप्रेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। आई एग्री फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, दैट्स राइट, दैट्स ट्रू, दैट्स अ गुड पॉइंट। अब ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीमेंट को शो करने के लिए। बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उनके यहाँ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में अक्सर आया होता है। आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं लिखने के लिए, लिख लिखे होते हैं सेंटेंसेस, बाद सिचुएशन में 5 सेंटेंसेस होते हैं, बाद सिचुएशन में 10 जुमले लिखे होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट सेंटेंसेस शोइंग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद दो सेंटेंसेस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स मजीद अब हम आगे इसी चीज़ को, जुमले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। अब ऊपर वाली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में जो हमने एक्सप्रेशंस देखे थे वो सिर्फ एक्सप्रेशंस थे, ठीक है, वो कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं थे। अब हम उन एक्सप्रेशंस को, जैसे पहला एक्सप्रेशन हमने देखा था आई एग्री, अब हम इस एक्सप्रेशन को अपने सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लाई, मुकम्मल रिप्लाई दे रहे हैं। आई एग्री टोटली, जिब्रान इज अ गुड स्टूडेंट, दैट्स राइट या फिर दैट्स ट्रू को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? दैट्स राइट, व्हेन यू ग्रीट हिम यू मस्ट स्ट्रैंगल हिम विद ऑल योर स्ट्रेंथ। यू आर राइट, आई गेस यू आर राइट, मतलब ये ज़ाहिर है जब हम किसी को कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, तो उसमें फिर हम उस बंदे की बात को रिपीट नहीं करते, आप सिर्फ ये कहते हैं आई गेस यू आर राइट, या आई थिंक दैट यू आर सेइंग व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, या आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। हम इतना ही कहते हैं, उस बात को रिपीट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, that's a good point. The point he mentioned during the speech was sensible. That's a good point. That was a good point. ठीक है, द पॉइंट ही मैंशन ड्यूरिंग द स्पीच वॉज अ गुड वन। तो अब ये एग्रीमेंट के लिए मुख्तलिफ हमने सेंटेंसेस देखे जिनको हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं चंद एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशंस और सेंटेंसेस में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन वो बुनियादी फ्रेज है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, ताकि वो सेंटेंस डिसएग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट की ढाल के अंदर ढल जाए, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आप ये सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे इन एक्सप्रेशंस को, तो फिर आपका जो सेंटेंस है वो डिसएग्रीमेंट की जानिब उसका झुकाव हो जाएगा, ठीक है। आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, example word to express disagreement, I'm afraid I disagree, ठीक है। I'm not sure, maybe, perhaps। अब ये maybe perhaps जो है, हो सकता है, शायद, लेकिन obviously जो इसकी टेंडेंसी होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। I don't agree। तो ये चंद एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमें देखिए। अब हम इन एक्सप्रेशन को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करके देखेंगे। His views are not correct. I am afraid I disagree. I'm not sure whether to listen to him or not. It may be possible to touch your kneecaps. Perhaps it might rain. मतलब कि दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हमने यूज की। परहैप्स वाला अलग सेंटेंसेस है, मे वाला अलग सेंटेंसेस है। आई डोंट एग्री विद व्हाट यू सेड, कि मुझे इस चीज से एग्रीमेंट नहीं है जो आपने कहा। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। अब जाहिर है बेसिकली तो लैंग्वेज के सीखने का मकसद क्या होता है? डायलॉग ना, ठीक है। डायलॉग जो होता है वो हमारा प्राइमरी मोटिव होता है कि हम गुफ्तगू कर सकें। तो यहाँ पे आपके सामने सैंपल एक डायलॉग दिया गया है डिसएग्रीमेंट का, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स की बात से डिसएग्री कर रहा है। जॉन कहता है, हे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी? जीडो, आई थिंक दिस मूवी इज रियली गुड। जॉन, I don't think so. The movie is so boring that I sleep while I watch it. The plot is flat and there is not
any suspense in the story. I like watching film, but this time I disagree with you. ठीक है, अब ये डिसएग्रीमेंट के ऊपर रीजंस भी दिए गए हैं, ठीक है, इसके अंदर तो रीजंस पे भी आपने फोकस करना है। बाज़ औक़ात आपको कहा जाता है कि आप डिसएग्रीमेंट का रीजन भी साथ दें, कि डिसएग्रीमेंट तो शो करें लेकिन उसके साथ साथ उसका रीजन भी मुहैया करें, ठीक है। सेकंड डायलॉग है एग्रीमेंट का, जिसमें बंदा एग्री कर रहा है, जो राय है दोनों की मुत्तफिक है एक ही चीज पे। Hey, look at Jerry says, hey, look at my new ring. Isn't it cool? John, yeah, I absolutely agree with you. Your ring is so cool. It's perfect. It perfectly matches with your finger. It must be very expensive ring. ठीक है, अब I absolutely agree with you, उसके बाद वो एग्रीमेंट को मजीद एक्सटेंड करता जाता है। मजीद बातें जो हैं वो, जो उसकी जितनी बातें हैं वो भी रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो वाकई एग्री कर रहा है कि जो उसकी न्यू रिंग है वो अच्छी है, वो कूल है, ठीक है। देन देयर इज दिस डायलॉग। तालिब कहता है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द टेस्ट ऑफ मीट बॉल? मुराद सेज, आई थिंक इट्स टेस्ट इज डिलिशियस। तालिब, आर यू श्योर? आई थिंक इट नीड्स समथिंग, इट टेस्ट लाइक समथिंग मिसिंग। तो अब आप देखें ना कि यहाँ पे डिसएग्रीमेंट शो किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो उसने ओपिनियन मांगा ना उसका, कि हाँ भी तुम्हारी राय क्या है। मुराद से तालिब जो है वो राय मांगता है कि आप बताएं कि इस मीट बॉल यानी कि कोफ्ता जो है इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मुराद कहता है कि मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा है। तालिब कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये अच्छा है? मुझे तो ये लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है, इट नीड्स समथिंग एल्स। अब ये एक और अंदाज है डिसएग्रीमेंट को शो करने का। नो आई डोंट थिंक सो, इट टेस्ट्स फाइन टू मी। अब फिर मुराद दोबारा डिसएग्रीमेंट कर रहा है, नो आई डोंट थिंक सो, ठीक है। इट इज अगेन सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। So I hope that you have understood that which expressions that we can use to agree and which expressions that can be used to show disagreement. ठीक है? Now there are some sentences and you have to use them in sentences of your own to show agreement or disagreement. Okay? First of all, the first expression is, it seems to me. It seems to me that the weather is perfectly nice. It seems to me the weather is perfectly nice. I feel. I feel that I must agree with you. सॉर्ट ऑफ, ठीक है। अब ये इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं जो कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अब आपने इन एक्सप्रेशंस को यूज करके सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। दो सेंटेंसेस मैंने आपको सैंपल के तौर पे बना के दे दिए। अब आगे मे बी को यूज करें, परहैप्स को यूज करें और आई एम नॉट श्योर को आप अपने सेंटेंस के अंदर यूज करें। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। आई डोंट एंटायरली एग्री विद यू। एग्री विद दिस थिंग, आई डोंट, मतलब कि जो भी है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आगे जगह खाली है। तो आपने एक इमेजिनरी सिचुएशन जो है उसको जहन में रखते हुए इस चीज को फिल करना है। आई सी वट यू मीन बट, अब बट चूंकि आ गया तो यकीनन आगे डिसएग्रीमेंट होगा। अब आपने डिसएग्रीमेंट का कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे फिट करना है। आई एग्री बट, आई एग्री बट, अब आगे दोबारा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि जो कि डिसएग्रीमेंट की जानिब मूव करेगा, ठीक है। अगेन फिल इन दी ब्लैंक्स है नंबर डी, यस बट ऑन दी अदर हैंड। अब ये दूसरा, मतलब कि दूसरा रुख दिखाने के लिए अगेन सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा इस जुमले से। यस बट डोंट यू थिंक, अगेन सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट या फिर एक दूसरा ओपिनियन जो है वो भी दिखाया। इसके बाद कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, यू हैव टू आइडेंटिफाई देम वेदर दे शो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। नंबर ए है टोटली एग्री विद यू। तो टोटली एग्री आ गया तो हमें पता है दैट इट इज एग्रीमेंट, वी डोंट नीड टू लुक फर्दर इनटू इट। आई डोंट थिंक सो, यू आर राइट, यू आर राइट, अगेन एग्रीमेंट है। शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अगेन एग्रीमेंट, yeah, I absolutely agree with you, agreement, no I don't think so, the food is really good there, ठीक है। No, I don't think so. Again, it is disagreement. Sorry, I forgot to write agreement and disagreement here. So let us put it here. Okay, जी, ठीक है। तो it is disagreement.
Now I have taken some exercises from your book, and you can look at them and you can solve these exercises. तो sentences आपको दिए गए हैं, ठीक है? What you have to do is you have to show your agreement or disagreement by using obviously the expressions that we have learned uh, while we were learning agreement and disagreement. ठीक है, तो first of all, buy land to build a house in Islamabad. आई थिंक अब इनमें सारे जुमलों में आपने एग्रीमेंट शो करना है, ठीक है? आई थिंक यू आर राइट, वी नीड टू बिल्ड अ हाउस इन इस्लामाबाद बिकॉज मोस्ट ऑफ our family members live here. Get a CNG kit fitted in the car. I absolutely agree with you because it saves a lot of cost in terms of fuel. Full stop. ठीक है? Plant more trees in the residential area. That would be really helpful. Planting more trees makes the area livable and it provides clean oxygen. ठीक है, आप रीजन आगे देते चले जाएंगे, रीजन के ज्यादा दरख्त क्यों लगाने चाहिए. Administer polio drops to all children in the country. अब इस पे एग्रीमेंट आप खुद शो करें, क्या आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे एग्रीमेंट शो करने के लिए. टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द कंट्री. एक्सरसाइज नंबर 2 है टू डिसएग्री ऑन द फॉलोइंग इश्यूज. अब आपने डिसएग्रीमेंट शो करना है. गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स in the country. I think you're quite mistaken. Girls should get the same opportunity like boys. ठीक है. नंबर 2 है police should be given total control to maintain law and order. ठीक है, अब आपने डिसएग्रीमेंट शो करना है. तो आप एक जो है वो रीज़न भी सोचें डिसएग्रीमेंट का, और फिर ये डिसएग्रीमेंट के एक्सप्रेशंस जो कि ऊपर हमने सीखे थे उनको यूज़ करके तो आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करें. नंबर 3, we should allow Indian films to be screened in the country. Again, you have to show disagreement, use the expressions of disagreement that we have learned, and apply them here. Sentence number 4, teenage offenders should be awarded capital punishment. Again, you have to show disagreement. Now use the expressions that we have learned earlier and reply to the sentence number 4 by showing your disagreement in this regard. Okay, thank you. That would be the end of this module, agreement and disagreement.